गुड आफ्टरनून बेटा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 करिए। The change in gravitational potential energy when a body of mass m is raised to a height n times of an r from the earth surface will be equal to how much? मैंने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया था, डिराइव भी किया था। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू mg into your h divided by 1 plus h divided by r when you're taking it to a certain height। ठीक है ना? तो h की वैल्यू कितनी दे रखा है यहाँ पर? n times of your r, isn't it? तो यहाँ पर हो गया this value will be equal to your mg into your h value is equals to how much for me? n into your r divided by 1 plus h is equals to your n into your r divided by your r. AR gets cancelled. Done. So this will be equal to how much for me? mg into your r. This will be equal to your n divided by 1 plus of your n. What's the option? Fourth option. Very good. चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा। The kinetic energy needed to project a body of mass m from the surface of the earth to infinity. From the surface of the earth से अगर हम लोग इसको infinity के पास लेके जा रहे हैं तो at infinity potential energy will be zero ना बेटा, isn't it? So I can say that for the question number 27, total energy on the surface must be equal to total energy at your infinity. इन्फिनिटी के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू m इनटू योर v स्क्वायर प्लस ऑफ हियर दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे जब रहेगा तो ये बन जाएगा हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। कैपिटल G कैपिटल M कैसे लिख सकता हूं मैं? G इनटू योर r स्क्वायर इनटू योर m डिवाइडेड बाय r लिख सकता हूं, isn't it? So this r and this square will get cancelled. So this will be equal to your mg into your r, isn't it? So that will be equal to your mg into your r. Third option. Next one. The mass and radius of the Earth and Moon are m1, r1 and m2 and r2 respectively. Their centers are at a distance d apart. With what velocity should a particle of mass m be projected from the midpoint of their center so that it may escape out to your infinity? Conservation of energy लगा लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए देखिए बेटा। टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली must be equal to your potential energy at the final position plus kinetic energy at the final position। यानी अगर मैं इसको लिख रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? माइनस दिस विल बी g इनटू योर m1 डिवाइडेड बाय सेंटर से है ना, मिड सेंटर से, तो d/2 हो जाएगा, है कि नहीं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी बिकॉज यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द बॉडी एंड एस्केप टू इंफिनिटी के पास, isn't it? So potential energy of the first body will be equal to this much. This will be also equal to plus minus minus. This is g into your m2 divided by your d/2, isn't it? Into your m, दोनों के लिए m भी होगा और यहाँ पर भी m होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी will be equal to half into m into v square. This will be equal to 0, isn't it? अगर यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस मैंने लिया ब्रैकेट तो यहाँ पर मुझे प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट मैंने ओपन लिया हुआ है बेसिकली। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ योर g इंटू योर m1 इंटू स्मॉल m इंटू 2 डिवाइडेड बाई योर d। दिस इज माइनस, दिस विल बी इक्वल टू योर g m2 इंटू स्मॉल m इंटू 2 डिवाइडेड बाई d will be equal to your, this will be equal to minus of your half into m into your v square, ठीक है ना? अगर एवरी टाइम में माइनस कॉमन ले लो तो दिस विल बी माइनस ऑफ योर, ये कितना बन जाएगा बेटा? दिस इज योर 2 times of your g m1 m2, isn't it? So this will be equal to your 2 times of a small m और a small m कट जाएगा, so it is a 2 times of g into m1 divided by your d, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, प्लस this is 2 times of g into your m2 divided by your d is equals to minus of half into your v square। ये माइनस और ये माइनस भी चले जाएगा, 2 इधर चले जाएगा वो तो 4 आ जाएगा, सो इट इज 4 into g कॉमन कैपिटल m1 प्लस कैपिटल m2 डिवाइडेड बाई t, दिस विल बी इक्वल टू योर v स्क्वायर। ये 2 इधर लेके चले गया ना बेटा, 4 हो गया। तो वेलोसिटी अगर निकाल रहा हूं तो इसमें से देख लीजिए रूट इधर आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर 4 times of your capital G into your m1 plus of your m2 divided by your d, so this is your velocity, v is equals to this much। डन बेटा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने को? थर्ड ऑप्शन।
ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन। द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए सैटेलाइट, ये तो अभी अपने को सिलेबस में नहीं है। Change in, yeah, question number 30 देखिए बेटा। A body of mass m is taken from the earth surface to a height equal to twice the radius of the earth. The change in the potential energy will be equal to how much? मैंने क्लास में भी करवाया था, बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी कर सकता है क्या, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू का फॉर्मूला बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी इंटू योर एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई योर आर, that is equals to your mg into h, कितना दे रहा है, twice the times, यानी 2 times of your r divided by, this is 1 plus 2 into r divided by r, a r gets cancelled, so it is a 2 mg into r divided by 3, isn't it? So 2 by 3 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, वेरी गुड। Next one. The gravitational potential energy of a body at a distance r from the center of the earth is u. The gravitational force at that point will be equal to how much? So direct question है ये वाला। Potential energy का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? U is equals to minus of g into your m1 m2 divided by r होता है ना, isn't it? तो फोर्स लिखना है अपने को, फोर्स is nothing but what? Negative potential gradient minus of du divided by your dr, ठीक है ना? So this will be equal to your minus of your d divided by your dr into this will be equal to minus g into m1 m2 divided by your r, माइनस माइनस चले गए यहाँ पर, तो ये हो गया प्लस राइट ना, तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, g इंटू m1 m2 तो कॉमन आ जाएगा, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ योर r पावर -1 डिवाइडेड बाई dr, ठीक है ना। अब इसका तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो बेसिकली, so this will be equal to how much for me beta, r square आ जाएगा, so this is your g into your m1 m2 into this one is minus of 1 by r square, यानी this value will be equal to minus of your g, this one is your m1 m2 divided by your r square, this is your force, यानी अगर f को मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा, g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर को मैं r लिख रहा हूँ इंटू r लिख लूँ, तो ये पूरा क्या होता है बेटा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू योर U डिवाइडेड बाई योर R, तो फोर्स ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, F इज इक्वल्स टू योर U डिवाइडेड बाई R, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है ना। छोटा सा कैलकुलेशन ही, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट वन, 32. If me is the mass of the earth and Fm is the mass of your given condition right now for me, the potential energy associated with an object of mass m situated at a distance r from the center of the earth and small r from the center of the moon is, क्या बोल रहा है, if me is the mass of the earth and capital mm is the mass of the moon and mass of the earth is 81 times the mass of moon, then potential energy associated with the object of mass m situated at a distance r from the center of the earth and r from the center of the moon will be equal to your how much? देखो पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर अर्थ और मून का टोटल एनर्जी लिखना है, सो आई कैन राइट हियर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर अर्थ एंड एज वेल एज ऑफ योर मून विल बी इक्वल टू हाउ मच, 32, यहाँ का कर लेता हूँ, दैट इज potential energy, total potential energy is equals to your potential energy of your earth plus potential energy of your moon, ठीक है ना, so that will be equal to minus of capital G, this is nothing but of your mass of your earth into mass of the particle divided by r, plus this will be equal to G into mass of your moon into mass of the particle divided by your small r, यानी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसके अंदर माइनस ऑफ जी इंटू योर एम कॉमन हो गया, so this will be equal to mass of the earth divided by capital R plus mass of the moon divided by small r, isn't it? Given in the problem for us कि mass of the earth is 81 times the mass of your moon, यानी potential energy will be equal to, this will become for me minus of your g into your, this will become for your m into your mass of earth is 81 times of mass of moon divided by capital R plus this one is mass of moon divided by small r, तो इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ योर कैपिटल जी, मास ऑफ मून भी बाहर आ जाएगा, स्मॉल m into this will be equal to 81 divided by r plus 1 by your small r, so this will be the answer for this, 81 divided by r and it will be your positive term, so what is the answer right now for me, minus के साथ आ जाएगा, so it will be a third one,
क्वेश्चन नंबर 33 कर लीजिए बेटा एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करिए सभी लोग। Apply the law of conservation of mechanical energy. Total energy on the surface of the earth must be equal to total energy at a certain height. आ गया बेटा ऑप्शन 1 ओके। A body attains a height equal to what? Radius of your earth when it is projected from the earth's surface. The velocity of the body when it was been projected will be equal to how much? Okay. 33. Total energy यानी potential energy on the earth plus kinetic energy on the earth must be equal to your potential energy at a certain height plus kinetic energy at a certain height. Potential energy on the surface of earth कितना होता है बेटा? Minus capital G capital M small m divided by your r. Kinetic energy will be equal to half into m into your v square. That is equals to potential energy at a height कितना equal to radius of earth बोला यानी capital G capital M small m divided by r plus h. h की वैल्यू किसके बराबर है? r के बराबर है प्लस दैट मींस r मतलब ऑलमोस्ट वेरी लार्ज, तो एट वेरी लार्जर डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है ना? तो इसमें स्मॉल m, इसमें स्मॉल m, इसमें स्मॉल m विल गेट कैंसिल. दिस विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर कैपिटल G कैपिटल M into your r plus v square divided by your 2 is equals to minus of your capital G capital M divided by 2r. ठीक है? We need to calculate the velocity. तो v square को निकाल लीजिए, कितना आ रहा देखिए. This is v square divided by 2 is equals to this is minus G capital M divided by 2 into r. ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M divided by 2r. ठीक है? ये माइनस साइन है तो इसको मैं फ्लिप कर दूं तो ये हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M into 1 by r minus 1 by 2r. तो कितना बन जाएगा? This will be equal to your this one is a capital G capital M into this one is nothing but of your 1 by r. 1 minus 1 by 2 is nothing but 1 by 2 यानी 2 by r. तो ये हो गया v square divided by 2. डन बेटा? तो a2 चले गया तो इसमें से वेलोसिटी निकाल लीजिए. v is equals to under root of your g into m divided by r. That will be the answer. gm divided by r. First option. चलिए
सेकंड ऑप्शन आ रहा है, 2gm नहीं आएगा ना बेटा, जी जी कैंसिल हो गया ना, और 2 वाला कैंसिल हो गया। चलिए 34. The body starts from the rest at a point which is a distance of r naught from the center of earth of mass m and radius r. The velocity acquired by the body when it reaches the surface of the earth will be equal to your how much for me. Same again, law of conservation of mechanical energy लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 यहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर बेटा, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू यहाँ पर कितना, माइनस ऑफ योर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम divided by radius of the earth होगा। radius of earth is represented by the symbol r naught at a distance of your r naught. Starts from that, it is at a point which is the distance of r naught from the center of the earth of mass capital M, and radius of that one is given as of your r. It is certain height के लिए बोल रहा हूँ मैं बस, isn't it? So that must be equal to your, that must be equal to your, ये कितना हो जाएगा बेटा, total potential energy will be equal to how much for me, this will be equal to your, यहाँ पर भी kinetic energy will become for me 0, isn't it? इक्वेट कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए। Body starts from the rest at a point which is the distance of r naught from the center of the earth and mass of capital M and radius r. The velocity acquired by the body when it reaches the surface of the earth will be equal to your how much? Starting from rest मतलब ये highest position पे है, and when it reaches the ground it will be equal to your half into m into v square. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बन जाएगा इसका, यहाँ पर बन जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय योर रेडियस ऑफ द अर्थ इज राइट नाउ r. तो ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय योर आर नॉट इज इक्वल्स टू योर हाफ इनटू एम इनटू वी स्क्वायर माइनस दिस इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। इसका उल्टा लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। डन बेटा, निकालना क्या है अपने को, द वेलोसिटी v निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, माइनस ऑफ योर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर नॉट, यहाँ पर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, दैट विल बी इक्वल टू योर हाफ इनटू एम इनटू योर वी स्क्वायर। स्मॉल एम एवरीवेयर विल गेट कैंसिल यहाँ पर बेटा, इज इट? तो हमने को निकालना है वी स्क्वायर राइट नाउ, तो इसमें से वी स्क्वायर निकाल लीजिए। फिर बना कितना मेरे पास देखो, अगर माइनस ऑफ योर कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर नॉट, this one will be plus capital G capital M divided by R is equals to V square divided by 2, ठीक है ना? तो माइनस साइन है, तो अगर उसको मैं फ्लिप करके लिख दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी v is equals to, इसमें से gm will be common, so this will be under root of your g into your m will be common into 2 times हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो it will be 1 by r minus of 1 by r naught, ठीक है ना? So that will be the best option, कितना हो जाएगा 2gm अंडर रूट में आ जाएगा 1 by r minus of 1 by r naught। आ गया सभी को? थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बेटा, A planet of mass m is moving in an elliptical orbit about the sun. The maximum and minimum distances of the planet from the sun are r1 and r2. The period of revolution of the planet will be proportional to, जब r1 r2 देता है तो मैंने बोला था एवरेज लेना है, एवरेज विल बी इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। प्लस थर्ड ला क्या बोलता है बेटा, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आर एवरेज का होल क्यूब। आर एवरेज का होल क्यूब मतलब दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा, r1 प्लस ऑफ योर r2, ठीक है ना? इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 2 ना बेटा यहाँ पर, तो इट इज डायरेक्टली r1 प्लस ऑफ योर r2 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है तो r1 टू द पावर ऑफ यानी t स्क्वायर हो जाएगा ये। So the period of revolution will be directly proportional to your how much बेटा, यानी t is directly proportional to your r1 plus r2 to the power of your 3 by 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना?
r1 plus r2 to the power of 3 by 2, and a fourth option will be the best option for this. So next one. Gravitational force directly proportional the orbital velocity तो अपने को नहीं हुआ. The next one, 41. The angular momentum of a planet of mass m orbiting around the sun is j. Then aerial velocity of its radius vector will be equal to your how much? Kepler's third law. Aerial velocity will always be constant ना बेटा. Angular momentum मतलब कितना बेटा? mv into your r will be equal to how much for me? Your angular momentum, that is nothing but L. So v into r अगर मैं लिख रहा हूँ तो this will be equal to L by your m, isn't it? Obviously this will be equal to how much for me? L by m होना चाहिए. L by m. Angular momentum is represented by j, यानी यह हो जाएगा j यहाँ पर, यानी j by m होना चाहिए. I don't know what is the option there right now here. Aerial velocity मतलब dA by dt. Aerial velocity is dA by dt. That will be equal to your half of your v into r. हाँ, so v into r was j by m लिख सकता हूँ ना मैं, j by 2m, सेकंड ऑप्शन. ठीक है ना, L by 2m. चलिए 43. मैंने तो क्लास में करवा दिया था. द डिस्टेंस ऑफ नेपट्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन आर नियरली 10 पावर 13 10 पावर 12 मीटर रेस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग दैट दे मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 10 रूट 10. क्लास में करवाया था, देखिए बेटा. What does not change the field of your central force? Torque and angular momentum conserve होना चाहिए, and angular momentum will be the best option for that. ठीक है ना. प्लैनेट्स वगैरह भी अपन का नहीं हुआ. सैटेलाइट रिवॉल्विंग एस्केप वेलोसिटी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए बेटा. 48 का देख लीजिए जल्दी से, कौन करेगा? तो क्लास में करवाया था मैंने. Figure shows the elliptical orbit of a planet M around the sun. The shaded region SCD कहाँ है? SCD ए वाला, SCD ए वाला पार्ट. The shaded area SCD is twice the shaded area of SAB. SAB से twice times है. If T1 is the time taken for the planet to move from C to D, C to D move करने के लिए time T1 लग रहा है, and T2 is the time taken for the body to move from A to B, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसके लिए time लग रहा है. तो मैंने बोला था एरिया बाई टाइम विल बी कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A1 by T1 विल बी इक्वल टू योर A2 by T2. तो अपने को निकालना क्या है? टाइम फ्रॉम A to B, यानी A to B मतलब T2 निकालना है ना. क्या पूछ रहा है? टाइम टू टाइम T2 से टाइम टेकन फ्रॉम A to B. अच्छा, T1 T2 का रिलेशन निकालना है मुझे. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. तो इसका अगर मैं एरिया A2 ले लूँ तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? A1. प्रॉब्लम में क्या बोला है कि द शेडेड एरिया SCD is twice the shaded area, यानी A1 is 2 times of your A2 divided by T1, that is equals to A2 divided by T2. A2 cancel हो गए, यानी T1 will be equal to 2 times of T2. Third option will be the best option. ठीक है ना, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए बेटा. वो तो बाइनरी स्टार मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी के नीचे आ जाएगा. ये वाला भी वही होगा. Question number 50 देखिए. A planet is revolving around the sun in elliptical orbit. Its closest and farthest distance from the sun are r minima, r max. Orbital angular velocity, तो orbital velocity का ही concept को छोड़ देता हूँ, छोड़ दीजिए. Okay. ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 कोई कर सकता है क्या? मैंने कल क्लास में भी एक बार बोला था, मैंने अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेके. Please try to do that question number 22. Anyone? Very large number of the particles. Very large number of the particles of your same mass. Same mass kept them or kept at a horizontal distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, so on, 0, 0. The total gravitational potential at this point will be equal to your how much? Can anyone give me the answer for this one? Direct question है बेटा. 22. Potential is obeying the principle of superposition. V1 plus V2 plus V3 लिख सकता हूँ बेटा ऐसा, isn't it?
तो फर्स्ट वन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी इंटू योर एम डिवाइडेड बाई 1। नेक्स्ट वन के लिए प्लस माइनस माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई योर 4 माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 8 प्लस सो ऑन, isn't it? तो इसमें मेरे को माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम अगर मैं कॉमन ले लिया तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाएगा। a geometric series of infinite numbers, so it is minus of g into your m into, यहाँ पर हो गया फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है बेटा 1/2, यानी ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ जी कैपिटल एम इंटू दिस वन इज 1 माइनस 1/2 इज नथिंग बट 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1/2 मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ योर जी इंटू योर एम आ जाएगा, 2 टाइम्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जी। डन। 21 देखिए बेटा, which of the following graph express the variation of the gravitational potential with a radius with a distance with the distance for an hollow sphere of radius r। hollow sphere के लिए potential will be equal to v is equals to minus capital G capital M divided by r for r lesser than or equal to capital R, it will be same बेटा, and v is equals to minus of capital G capital M divided by small r when small r is greater than of your capital R, ठीक है ना। तो what will be the graph बेटा, नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो हम लोग विद साइन कन्वेंशन लेना, सो सेंटर से लेके सरफेस तक इट विल बी कांस्टेंट बेटा, वेरास फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज, सो थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। 24 तो मैंने क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए बेटा, कैन एनीवन ट्राई टू गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। A spherical shell is cut into two equal pieces along a chord as shown in the figure. P is a point on a planet of the chord. The gravitational field at P due to the upper part is I1 and that due to lower part is I2. What is the relation between them? So यहाँ पर देख लीजिए ऊपर और नीचे, तो फील्ड जो है ना that will always remain for me constant, isn't it? Because every point inside the spherical shell will have the zero gravitational field anywhere inside. जीरो होगा ना बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड एनीवेयर विल बी इक्वल टू जीरो, तो I1 विल बी इक्वल टू I2 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट वन बेटा, two bodies of mass of 100 kg and 10 power 4 kg are lying 1 meter apart. At what distance from 100 kg body will be intensity of gravitational field will be zero? Null point का formula g into your 100 divided by x square will be equal to g into 10 to the power of 4 divided by, ये हो जाएगा कितना डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर, माने 1 माइनस ऑफ योर x का होल स्क्वायर, g गेट्स कैंसिल, तो यहाँ से 2 चले जाएगा तो ये चले जाएगा तो ये बन गया 10 पावर 2, isn't it? तो ये हो गया मेरे पास 1 by x square is equals to 10 square मतलब 100 divided by 1 minus of your x का whole square, isn't it? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 100 into x will be equal to your how much for me? 100 into your x square is equals to your 1 minus of your x का whole square। कितना आ रहा? Can I write this one as 10x is equals to 1 minus x, minus इधर आ जाएगा तो 11x is equals to 1, यानी x will be equal to 1 by 11 meters, 1 by 11 meters आ रहा ना बेटा, थर्ड ऑप्शन। x is equals to d divided by under root of your m2 divided by m1 plus 1 होगा ना, so d is given as 1 divided by under root of 10 power 4 divided by 10 power 2 plus 1 होगा ना, तो ये 2 चले गए 2 चले गए, this is 1 by root of your 100 plus 1, root of 100 मतलब कितना 10, 10 plus 1 मतलब 11 ना, 1 by 11 डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला डाले तो वही आ रहा हूँ। चलिए ग्राफ देख लीजिए, which of the following plot represents the variation of gravitational field of a particle with a distance r due to the thin spherical shell of radius r?
फॉर द थिन स्पेरिकल शेल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस पार्ट ऑफ रिलेशन, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू 2, फिर बाकी के तो हो ही नहीं सकता बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, next one, 15th one. The value of g reduces to half of its value at the surface of the earth at a height h. Then what is the relation between them? So g at your height कितना बोला देखो 15th one. G at your height is given as of your g by 2. G at certain height का फॉर्मूला क्या है बेटा? That is nothing but g into your m divided by r plus of your h का whole square. यानी g at a certain height will be equal to your, this will be equal to g into your m divided by, this will be equal to your r plus of your h into your whole square. G at certain height कितना है g by 2. G by 2 is equals to g into your m divided by r plus of your h into whole square. Small g का वैल्यू क्या था बेटा? Small g वैल्यू is equals to capital G capital M divided by r square. ये हो जाएगा g into your m divided by r square into 2 is equals to capital G capital M divided by r plus of your h whole square. G m gets cancelled. So 2 times of r square is equals to r plus of your h whole square. तो ये बन जाएगा रूट टू इंटू आर इज इक्वल्स टू योर आर प्लस ऑफ योर एच. सो एच वैल्यू विल बी इक्वल टू मच वन में बेटा रूट टू आर माइनस ऑफ योर आर, यानी रूट टू माइनस वन इंटू योर आर. दिस विल बी द आंसर. फोर्थ वन. सिक्स वन का देख लीजिए बेटा, किसी को आया? ऑलरेडी करे होंगे आप लोग. So two spheres of the same masses and radius are brought in contact, then the force of attraction between them will be equal to how much? Two spheres है बेटा, when they are being brought in contact, isn't the force between them will be equal to how much? Distance between them will become for me 2r. So F is equals to your g into this will be your m1 m2 divided by distance कितना हो जाएगा 2r square. So that will be equal to g. Mass will be solid sphere के लिए 4 by 3 pi into your r cube into rho into this one is 4 by 3 pi into your r cube into rho divided by 2 into r to the power of your square, यानी ये हो गया 4 6. तो ये 6 हो जाएगा, 2 चले जाएगा, तो कितना बन जाएगा बेटा देखो r power 4. So force is directly proportional to r power 4. Fourth option, very good. Third one देख लीजिए बेटा. Two particles of equal mass go around in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of that particle will be equal to how much? यानी centripetal force आप equate कर लीजिए. फोर्स का फॉर्मूला जब आप लिखोगे दो पार्टिकल्स के बीच में, F is equals to capital G into your m that is nothing but of your m square divided by distance between them is nothing but of your, जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो r प्लस r डायमीटर लेना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट 2r स्क्वायर. तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर r will be equal to g into your m square divided by 4 into your r square. ये स्क्वायर और यहाँ चलेगा, ये स्क्वायर और यहाँ पर चले जाएगा. वेलोसिटी will be equal to v square is equals to g into your m divided by 4 into your r आ जाएगा, isn't it? So v is equals to under root of your g into your m divided by r 4. तो 1/4 को बाहर निकाल लीजिए. So this will be equal to 1/2 आ जाएगा. 1/2 under root of your g into your m divided by r. Third option will be the answer. First question बेटा. Weight of an object is normal reaction between ground and the object. Gravitational force exerted by the earth on the object depends on the frame of reference. The net force on an object. It is a gravitational force exerted by the earth on an object is called as of your weight of the object. Done? बस इतने ही रहेंगे बेटा, ऐसे ही रहेंगे क्वेश्चंस. आप थोड़ा बहुत आप इसको प्रैक्टिस कर लो, आराम से निकल जाता है बेस. डन. क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन.
मेरे पास टाइम नहीं है, बट स्टिल यू कैन ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. ये भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए. स्पॉट द रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है. देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस. इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो आप लोग. Value of the g decreases when we go from pole to equators, isn't it? ये वाला.